A very good evening, all of you guys. Welcome to Unacademy. Welcome to Kreatryx. So let's start the session. Welcome to a new series, that is the question series from Kreatryx team. Yeah. So please confirm my audio, video, everything is fine. Very good evening. Very good evening. Okay. So wish you a happy new year, all of you guys. This is my first class in 2023 for you. So let's start the session. I hope this year you will be definitely succeeded regarding your GATE or whatever the examination you are aiming for, whether it is a PSU or whether it is a JEE, ESE examination, whatever you aim, definitely I feel that you will be succeeding definitely for this. And keep your hard working for the next 1 month also. Keep it as it is, keep the same momentum. Definitely you will find the success, right? So let's start the session. So this is a new series by our team Kreatryx guys. For you people today and tomorrow, I will be taking the sessions. That is, I'll be taking the sessions of today network analysis, tomorrow digital circuits. That is the most expected questions. इसमें expected का मतलब ये नहीं ये questions compulsory आपके exam पे आ सकते हैं. ऐसा नहीं. Those models which are most frequently occurring are those models which they can ask. They are that is the most probable models we are going to discuss in this particular chapter. I mean this particular lecture. So here I will show you quickly. Altogether, I kept 25 questions for you. Even I kept the question numbers also ready for you so that you can understand what is the last question, when the last question is going to complete. And I distributed the topics based on the regular weightage, more questions on AC analysis, transients, and network theorems, and also basics, and also two-port networks. All the topics I have covered in this. So let's start the session. So before starting the session, I hope you people know that Unacademy is offering you 23% off for Unacademy Plus and Iconic subscriptions. This is the New Year gift for you up to Jan 6. So those who are aiming for 2024 and 2025 GATE examination or any other examination like ESE, this is the one of the best offer, guys. Don't miss this offer. This is the till date highest possible offer on an academy subscription. So if you want to take the subscription, or if you are friend, your junior, anybody want a subscription, you can refer this and use the code Shankar. That will give you 23% off on your subscription. Okay. So these are our ESE aspirants. Congrats to all the ESE aspirants from ECE and electrical engineering this particular year, ESE 2022 examination. And the new batch already going on for 2024 aspirants, that is the Udan batch and बुनियाद बैच. ये दोनों बैचेस तो चल रहा है 24-25 एस्पिरेंट्स के लिए. नेटवर्क फिर तो शुरू हो गया. सो आप लोग इसमें आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन गाइस. ये सभी इसका यूएसपी है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वे पे आपका सिलेबस कवर हो पाएगा. सारे डिजिटल बुक्स ऑफ गेट नोट्स मिलेगा आपको एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस. ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द Udan and Bunyad batch. ये तो complete package है आपको. टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, everything you will be getting it. So let's start the series. So this is my first question for you. Every question में depending on the question में थोड़ा सा टाइम देके इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. So total 25 questions are ready for you. इस क्वेश्चन के 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ठीक है. चलो शुरू. रेडी. एनलॉग का रेडी, ठीक है. मैं आई विल अपडेट दैट. आई थिंक एनलॉग का ऑलरेडी अंकित सर इज टेकिंग यार. I think he will be starting in this week. Right. Chalo, last 7 seconds. I need an answer from you people. It's not a very great difficult question. Looks complex, but not at all difficult. हो गया time.
ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी ऐसे अरेंज किया, स्टार्टिंग तो बेसिक्स, इसके बाद थ्योरम्स आएगा, टू पोर्ट नेटवर्क्स, ट्रांजिएंट, देन लास्टली एसी एनालिसिस। इट इज नॉट इन ए रैंडम वे, जैसा हम रेगुलर क्लास में हमारा सिलेबस डिस्कस करते हैं, सेम मॉडल और सेम व्हाट वी कॉल ऑर्डर पे हमने अरेंज किया। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्क्यूट शोन इन द फिगर, द सर्क्यूट में करंट सोर्स ऑफ 1 एम्पियर है, वोल्टेज सोर्स ऑफ 5 वोल्ट्स, R1 R2 R3 सभी रेजिस्टर तो 1 ओम है भाई, इंडक्टर्स आर 1 हेनरी, कैपेसिटर्स आर 1 फैराड। ठीक है भाई, क्या करना चाहिए, द करंट्स इन द रेजिस्टर आर 3 and the voltage V respectively and the voltage source V। so आपको इसमें करंट चाहिए और इस पे भी करंट चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो आपको ये पता है, डीसी अप्लाई किया तो इंडक्टर क्या करेगा सर, इंडक्टर तो शॉर्ट हो जाएगा सर, कैपेसिटर तो ओपन सर्क्यूट, इंडक्टर तो शॉर्ट, कैपेसिटर तो ओपन, इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन, इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। ठीक है, बाकी नेटवर्क तो एज इट इज प्लॉट करो भाई। ठीक है, ये वाला नेटवर्क जो है ना, इसमें एवरी रेजिस्टर इज 1 ओम ओनली। एंड द वोल्टेज सोर्स वी का वैल्यू कितना दिया, 5। सो एग्जामिनर को ये करंट और ये करंट चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज दिस वोल्टेज, पैरेलल पे वोल्टेज तो सेम है ना, सो 5 वोल्ट, सो कितना करंट चलेगा यहीं पे, 5 एम्पियर। सो ये करंट तो 1 एम्पियर, ये करंट तो 5 एम्पियर। डोंट एक्सपेक्ट द theory in this session guys, okay? So I hope you know the KCL, right? The entering current must be always equal to leaving current. So what is this current, must be 4 ampere। ठीक है, so this current must be 4 और in this direction पे -4। so examiner direction तो specify नहीं किया ना, so you can take what are the currents, 5 and 4, okay, 5 and 4। ठीक है, so the current in the resistor is 5 ohms, 5 ampere, and voltage source का कितना होता है सर, 4 ampere। 5 and 4, राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन डी। बहुत लोग तो डी दिया, परफेक्ट। हाँ, यूट्यूब में पोल तो पॉसिबल नहीं, ओनली ऑन व्हाट वी कॉल अन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल, हियर इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यू कैन कमेंट द आंसर, नो प्रॉब्लम। आयुष, सोना, भुवनेश्वरी, आसिफ, अभी, विनय, सौम्या, आर्यन, गर्ग एंड टेक, ऑल ऑफ यू राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी। लेकिन इसके लिए भी मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, सो हार्डली 25 क्वेश्चंस, आई विल डिस्कस 2 to 3 minutes एवरी क्वेश्चन, सो मे बी 1-1.5 आवर का सेशन है ये, सो मैक्सिमम 2 घंटे से कम पे हो जाएगा। सो एज अर्ली एज पॉसिबल लेट्स कंप्लीट इट। सो बिकॉज मेरे हिसाब से ये क्लास अटेंड करने समय तक ऑलरेडी आप नेटवर्क तो कंप्लीट किया अच्छे से। ठीक है, सो यू शुड बी फास्ट इनफ, आपका एक्यूरेसी भी चेक करो, आपका स्पीड भी चेक करो। ठीक है, ऐसा नहीं स्लोली करेगा सर, आप स्टार्टिंग स्टेज पे नहीं है ना अभी, दिस इज द बेसिक सब्जेक्ट एंड यू आर इन द एंडिंग स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। सो डोंट मिस इट। टुमारो सेम टाइम, नहीं, टुमारो 9:30 पे वी विल मीट अगेन फॉर डिजिटल सर्क्यूट्स। सिमिलर वाला एक क्वेश्चन, एक क्लास लेता हूँ। सो आसिफ, आर्यन एंड विनय तो बोल रहे ऑप्शन ए, यस, 24 ohms इज द राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, टाइम अप। सो लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स। द वोल्टेज, the voltage versus current curve of the circuit is shown। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स E is, okay, uh, here you have RS and VS, okay, fine sir, and here you have 100 ohms। so first case में when the current is zero, करंट जीरो का मतलब क्या होता है सर, करंट जीरो का मतलब क्या होता है सर, ओपन सर्क्यूट से मैंने ओपन सर्क्यूट किया, करंट जीरो है सर। इस केस में मेरे को वोल्टेज कितना मिला सर, 100।
इसका मतलब क्या, when there is no current here there will not be any drop here, ये Vs यहीं पे आएगा सर। सो मेरे को पता चला Vs का वैल्यू हाउ मच इट इज, Vs का वैल्यू इज 100। सो ठीक है सर, सो लेट मी टेक Vs इक्वल टू 100। सो Vs का वैल्यू तो 100 ले लिया, ठीक है। ये तो Rs, ये तो ऑलरेडी 100 ओम। नाउ सेकंड वाला पॉइंट, यहीं पे 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। 0.5 का मतलब क्या, मैंने कुछ लोड कनेक्ट किया, यहीं पे सम लोड इज कनेक्टेड, इट कैन बी एनीथिंग सच दैट माय करंट हियर इज 0.5, बट मेरा वोल्टेज कितना है भाई, 88। सो अभी ध्यान से देखो, ठीक है। सो 0.5, when the current is 0.5, okay, this is 10 ohm resistor, 10 ohm resistor ना। So this is given by examiner, ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है ना, 0.5 into 10 तो 5 वोल्ट होता है सर। ये तो 93 वोल्ट सर, ये 0.5 सर। केवीएल चाचा को सेटिस्फाई करने के लिए ये 100 है तो ये 93 है तो ये कंपलसरी कितना होना चाहिए सर, 7। ठीक है, मेरा आरएस का वैल्यू कितना होता है सर, 7 बाई 0.5, 14 ohms, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। You don't ask including this it will be 24, including this it will be 24, but internal resistance of the source ही चाहिए तो it will be how much, it will be how much, 14 only, राइट। ऑप्शन डी जो लोग दिया ना, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यही पे आप अलग अलग वे से कर सकते हैं भाई, मैं दूसरा मेथड भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो लिसन केयरफुली, ये तो 88 एंड 0.5 दिया ना, सो इसका मतलब इसका करंट 0.5, current 0.5 means your R equivalent is how much, I is 0.5, which is 100 by R equivalent. So R equivalent is 100 by 0.5, 200. 200 is equal to Rs plus 10 plus. What is the resistance of this? What is the load resistance RL? 88 by 0.5. 88 by 0.5, 160 or 172. 176. राइट। सो आर एस कितना होता है सर, 200 माइनस 186, ऐसा भी कर सकते हैं, आपको 14 ही मिलेगा। ये अनदर मेथड, पूरा करंट तो मिला, वोल्टेज बाय पूरा रेजिस्टेंस विल गिव यू करंट। पूरा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है सर, 200। इसका रेजिस्टेंस पता है, लोड का वोल्टेज करंट पता है ना, वोल्टेज करंट रेशियो विल गिव यू द लोड रेजिस्टेंस, फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड आरएस। एनी मेथड विल गिव यू द सेम आंसर। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो ये सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस, दोनों सोर्सेस तो है यहीं पे। इफ द वोल्टेज एट नोड 1 इज -1 वोल्ट, ठीक है, नोड 1 पे वोल्टेज तो एग्जामिनर दिया, ठीक है। देन व्हाट इज द वोल्टेज एट द नोड 2? आई होप यू पीपल कैन डू इट इजीली, सो गिव इट ट्राई। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नोड एनालिसिस, गिव इट ट्राई। So third question of 25, you have 22 questions more. Okay, so let's continue. So next question might be from the theorem. So circuit consisting of the 30 seconds more here. Independent source high, dependent source high. If the voltage at the node 1 यही पे -1, ये देना भी नहीं चाहिए बट एग्जामिनर तो दिया। What is the answer? कश आना तो 19 रुपीज दिया हमारे क्रिएट्रिक्स चैनल के लिए, थैंक यू। सो जीरो आ रहा है, 2 volts 2 volts 2 volts 0, ठीक है। लेट मी ट्राई बाय द कन्वेंशनल मेथड, चलो। So examiner has given this node voltage is how much? -1. -1 का मतलब current in this direction will be 1 ampere. This is 1 volt. ठीक है, VR1 तो -1. So 4 VR is equal to -4. ये तो ठीक है, but listen carefully. ये current कितना?
ये 1 एम्पियर, ये करंट कितना 1 एम्पियर, सो ये करंट कितना होता है 2 एम्पियर, सो दिस विल बी 4, ठीक है। यही पे 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। ये तो 4 एम्पियर है, ये कितना 6 एम्पियर, सो 6 × 1/3, 2 वोल्ट्स हो गया क्वेश्चन। डोंट अप्लाई नोड एनालिसिस एंड ऑल, सिंपल केसीएल केवीएल से हो जाएगा। नहीं है तो आप नॉर्मल कन्वेंशनल नोड नोड एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो V2 तो 2 है, नहीं है तो आप आपके लिए V2 प्लस 4 VR1 minus of minus plus 1 by 0.5 plus V2 by 1/3, करंट एंटरिंग इज 4 एम्पियर ना, -4 इक्वल टू 0। ये प्रोसेस से भी कर सकते हैं, VR1 इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करके निकालो, आपको सेम आंसर आएगा, बट इतना करना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन दिया ना इसको यूज करो, 1 एम्पियर यही पे, ये तो -1 है, सो एंटरिंग तो 1, दोनों लीविंग विल बी 2, 2 इज कमिंग हियर, सो I2 इज 2 है तो 2I2 तो 4 होता है, 2 and 4 विल कम हियर, लीविंग विल बी 6। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स का क्वेश्चन है। डब्बा वाला क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, बहुत सारे बार क्वेश्चन एग्जाम पे भी आया, सो ये भी ट्राई कर लो आप, ठीक है। मेरे को पता नहीं आसिफ, आई थिंक whoever in any YouTube channel it is possible, whoever likes it they will donate something for the channel, I feel, even I don't know much about it, ठीक है। So question 4, for the circuit shown below, if E equal to E1, I is removed, ठीक है। E equal to E1, so when E equal to E1 the current source तो remove किया, 5 वोल्ट V तो मिला, E equal to 0 पे I equal to 1 एम्पियर, ठीक है। then V equal to 5 वोल्ट्स, जैसा इंफॉर्मेशन दिया आप इसको व्हाट वी कॉल इक्वेशन पे कन्वर्ट करो, हो जाएगा क्वेश्चन। when E equal to E1 I replace it by 5 ohm, then what is the value of V? 20 seconds more, 20 seconds more, give a try। इसका भी 2 आया क्या? 2 तो ऑप्शंस में नहीं है। अरे भाई टाइम आप आंसर दे दो। भुवनेश्वरी दिया ऑप्शन 5, राइट। चलो, सो फॉर द सर्क्यूट शोन इन द फिगर E इक्वल टू E1, ठीक है। फर्स्ट केस में E इक्वल टू E1 आई रिमूव से, ये वाला क्वेश्चन जो है ना नेटवर्क थ्योरम्स का है, यही से फर्स्ट में 3 क्वेश्चंस बेसिक्स का किया ना। सो नाउ वी एंटर्ड इनटू नेटवर्क थ्योरम्स। थ्योरम्स में जनरली मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2 थ्योरम्स। What are they? Thevenin's theorem, maximum power transfer theorem. So basics में जो क्वेश्चंस होता है ना, जनरली दे में टेस्ट यू और केसीएल केवीएल नोड एनालिसिस का क्वेश्चंस आने के लिए बहुत चांस है। थ्योरम्स पे आएंगे तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्कर्ड थ्योरम्स जो होता है ना नेटवर्क थ्योरम्स में, थेवेनिन्स एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। सो थेवेनिन्स में डिपेंडेंट सोर्स वाला क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में नेटवर्क विद एसी एलिमेंट्स लिटिल इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो लेट्स डू द क्वेश्चंस, ठीक है। So for the circuit shown in the figure E equal to E1, I removed means current source open circuit किया. So the first case I is made equal to 0, E is equal to E1. Then what is V? He got it 5 volt. इसको बोलते हैं Thevenin voltage, because I 0 किया तो the open circuit voltage measured across the terminals is called as Thevenin voltage, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट तो हो गया, सेकंड पॉइंट then V equal to 5, ठीक है। सो सेम नेटवर्क ले लो भाई, same network resistive circuit, okay, 1 ohm. Then what he has got, if then V equal to 5 volts, okay, that is हो गया। next when E equal to 0, so a voltage source जो है ना इसको शॉर्ट सर्क्यूट कर लो, किया मैंने, ठीक है सर। शॉर्ट सर्क्यूट किया, इसके बाद क्या, ठीक है। नाउ करंट सोर्स आई का वैल्यू कितना रखा, 1 एम्पियर, ठीक है।
करंट सोर्स का वैल्यू 1 एम्पियर, ठीक है। देन देन द वोल्टेज अगेन V इक्वल टू हाउ मच आया, 5 वोल्ट आया, ठीक है सर। यही से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा सर, whenever the input is source is short circuited, the resistance measured across the terminals is called the Thevenin's resistance. So if you make it equal to 0, the resistance measured across these terminals can be obtained by its V by I ratio. It will be constant, whatever may be the input value, whatever may be the current value, the ratio will be always constant for a resistive network. So आपका V कितना मिला, 5, ठीक है। I कितना मिला, 1। So RTH will be 5/1, 5 ohms। हो गया सर। So मेरा नेटवर्क का VTH और दिस वन दोनों मिला। थर्ड पॉइंट, so network equivalent क्या है, VTH equal to 5, RTH is also equal to 5। Now the question here is the current source I is replaced by a 5 ohm resistor। So मेरा current source जो है ना, इसको 5 ohm resistor से मैंने replace किया। Then what is V? Voltage division principle के हिसाब से V will be 2. Sometimes examiner can ask you one thing here. Firstly, listen. Is it clear first? First I equal to 0 में E equal to E1, you got V because current 0, Thevenin's voltage. Then E1, E0, then V by ratio will give you RTH. So I replace this entire network with its Thevenin's. Now current source is replaced by 5 ohm resistor. Many people don't read this statement properly. After every full stop, you should stop and understand. Otherwise, it will be always confusing to do these kind of questions. ठीक है? So third में मैंने 5 कनेक्ट किया, voltage division principle से मैंने V निकाला। If examiner asks you what is the Thevenin's resistance of the network, what is the answer? What is the Thevenin's resistance of RTH of the resistive network in this question? Resistive network का RTH क्या? Thank you. That since over, I don't know your name. Thank you. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन तो मैं प्लस पे मैं तो आई टॉट इट इन द प्लस। यूट्यूब आई एम नॉट एबल टू टीच बिकॉज आई डोंट फील स्ट्रेंथ विल कम फॉर दैट। मैं तो माइक्रो प्रोसेसर को एक्सपेरिमेंट किया, बहुत कम लोग आए इसलिए बंद किया। सो सीओ आई कैन टीच बट आई कैन नॉट इट। ओके, ट्राई करता हूँ, पॉसिबिलिटी है तो स्पेशल क्लास में कुछ ट्राई करता हूँ, ठीक है। नहीं, 5 गलत है, 5 गलत है, 5 गलत है। पूरा नेटवर्क का 5 है। केवल रेसिस्टिव नेटवर्क if we ask you, this is 4 only because this is 5 now, 1 plus remaining will give you 5, the remaining will be 4। RTH of this part is only resistive network is 4, total is 5। चलो next question। In the network shown in the figure, they have given you IS1, IS2, the values of the current sources V, A, B। ओके, different conditions तो दिया, आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k टू डिस्क्राइब IS1 इक्वल टू KS2 है, तो k वैल्यू कितना हो सकते हैं? सो प्लीज ट्राई सुपरपोजिशन थ्योरम का। चलो सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, प्लीज गिव इट ट्राई। कम ऑन। So 20% of your class is done. Okay, 5 seconds more, 4 seconds, 3 and done, ठीक है। सो नेटवर्क शोन इन द फिगर। सो इस वाला क्वेश्चंस को कैसा करना मैंने ऑलरेडी बताया in our regular class। So take the IS1, IS2, VAB in a table, ठीक है। So IS1 is 5 ampere, IS2 10, he got 120 as the VA, and again he got 10 and 5, he got the 15, ठीक है। Then what is the value of K to describe IS1 equal to KS2 such that
VAB इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक कॉमन सेंस होता है, यहीं पे 15 है ना, कैन आई मेक इट -120 हियर? हाउ टू मेक -120 हियर? 15 को मैंने -120 किया तो दोनों लाइंस ऐड किया तो काम हो जाएंगे ना। सो 15 इंटू 8 कितना होता है सर? 15 इंटू 8 तो 120, 15 इंटू -8 हो जाएगा प्रॉब्लम। सो 15 मल्टीप्लाई विथ -8, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। मेरा को response to be multiplied by -8, then excitation should also be multiplied by the same constant -8. So -80 -40. So now add this response and also this response. Say first response and third response. If you have, add 1 and 3. If the inputs of 1 and 3 are combinedly applied, so 5 minus 80 कितना होता है सर? -75, ठीक है। एंड 10 minus 40 कितना होता है सर? 10 minus 40 minus 30, 120 minus 120 0, हो गया काम, ठीक है। सो IS1 must be -75, IS2 must be -30, or you can say IS1 equal to 2.5 times IS1, because 2.5 into 30 is 100. K value is 2. Very good, very good. Right answer. 2.5, 2.5, 2.5. Anybody got any doubt also happy to ask me. No, don't worry. So shall we proceed further? ठीक है। So मैं minimal time पे खत्म करना चाहिए। So आसान से कर सकते provided your concepts are very clear. So shall we proceed for the next question? Again one more question from network theorems. चलो। Question number 6. So the source network. So maximum power transfer theorem का question है। Most famous question already हमने इस मॉडल का question तो किया रेगुलर क्लास में भी। Similar model. Some people might remember the answer also. Yeah, we can use the linear equation in the question because the network is linear. Any linear operation you can perform. Anubhav Sharma 0.8, Sire 0.8. Great. Right answer 0.8. 0.8 is the right answer. 0 नहीं भाई, 0 क्यों हुआ? 0.8 is the right answer. So एग्जाम इस क्वेश्चन तो बहुत आसान है, provided you understand the basic. Listen here. Excuse me. The source network is, okay, this is the source network, this is the load network, is connected to the load network shown by the dashed lines. Okay, the power transferred from S to L would be maximum when. So मेरे को S से L से maximum चाहिए तो क्या कंडीशन चाहिए सर? इसके लिए RL must be equal to 2 ohms. ठीक है सर, RL तो 2 होना चाहिए? नहीं. ओके, RL of network must be 2 ohms. एक डिफरेंस क्या होता है सर? RL का मतलब केवल ये, नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना होता है सर? इसका रेजिस्टेंस, और ये भी एक एलिमेंट है ना इसका रेजिस्टेंस, दैट इज इस पे कुछ करंट जाएंगे तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो दैट इज व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वल टू RL plus 3 by I must be equal to how much? 2. This is the resistance of the source. So दोनों मिलके आपको 2 ओम देना चाहिए, ठीक है सर, दे सकते, क्या दिक्कत है? ये दोनों मिलके 2 ओम दिया तो ठीक है, RLN बोल सकते ना मैंने, RLN, ठीक है, RLN इज द नाम रखा मैंने, ठीक है, RL ऑफ द नेटवर्क. So here 2 ohms, 10 volt, ठीक है. So ये मेरा करंट,
ठीक है, करंट कितना होता है सर उस केस में? करंट कितना होता है सर? 10/2 plus 2, 2.5. So for maximum power transfer, मेरा RLN must be equal to 2, not the RL. पूरा network should give me 2 ohms. उस केस में करंट कितना होता है सर? 10/2 plus 2, 10/4, 2.5. ठीक है सर, 10/4, 2.5 हो जाएंगे क्वेश्चन अभी। देखो, I equal to 2.5. Now, what is RLN? It is equal to 2. It is equal to, I don't know RL value, but plus 3 by, what is the current? 2.5. So 2 equal to RL by RL plus 30 by 25, 6 by 5. That is 1 point. RL equal to 0.8. Okay. Any doubt, please ask. आपको कोई भी doubt है तो feel free to ask. You can do by different methods. Whenever this impedance is equal to this impedance, यहीं पे 5 वोल्ट आएगा, यहीं पे 5 वोल्ट आएगा. So ये पूरा वोल्टेज तो 5 लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ये तो 5 होना चाहिए, करंट तो 2.5 होना चाहिए. So 5 minus 3 by 2.5 will give you the value of this. In that way also you can do the question. You will get the same answer. ठीक है. चलो next question. What is your Rajdeep? I want to take negative term because if I add both of them, my answer should be 0. So excitation is multiplied by a constant minus 8, response also multiplied by the same constant minus 8, because in the question he asked the answer to be 0. So 0 आने के लिए दोनों ऐड किया तो 0 हो जाएगा ना. So इसलिए यहीं पे 120 में मेरे को यहीं पे -120 चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 7. So consider the following circuit. In the above circuit, Vs equal to, ये भी सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं. You can try the value of Vs equal to 12. Here in the above circuit, Vs equal to 3 दिया, I 4 एम्पियर दिया, and what is the value of I when Vs equal to 12? मैंने Vs को 12 किया तो मेरा I वैल्यू कितना हो सकता है भाई? ठीक है, क्वेश्चन 6 का सेकंड मेथड भी मैंने बोला ना आपको. एक मिनट, क्वेश्चन 6 का कन्वेंशनली कैसा करना चाहिए सर? You connect this network, take the loop equation, then find the power equation, which is I square into RL and 3I. Make dP by DRL equal to 0. Okay, what is the power equation here? Conventionally, I square RL plus 3I. Okay, so make dP by DRL equal to 0. Okay, so d by DRL of this, you can see, don't make directly it is I square plus 0. 9. I is a function of RL. Substitute that also and do d by DRL, you will get the answer. What is I? It is 10 minus 3 is 7 by I equal to how much? 10 minus 3 by 2 plus RL. 7 by 2 plus RL. ये सब्स्टिट्यूट करके यहीं पे एंड d by DRL कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं. कन्वेंशनल मेथड. ओके, चलो कंटिन्यू. गिव इट ट्राई, गिव इट ट्राई. So we entered into the last 1 month of your examination. So this is 1 month. I'll try to take every single day at least some sort of session for you, which is helpful. It can be revision series, question series, different series, or short sessions for your doubts clarification, different things. We will be always there in the YouTube for you people. Okay. So we planned many things are planned. I hope you know the schedule for the January and kids sir ne session pe I think explain bhi kiya. So let's do it. Consider the following circuit. Vs तो 3 है भाई, I तो 4 है. What is the value of I when Vs equal to 12? ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन I is 4, ये कितना 3. ठीक है, then in the above circuit when Vs equal to 3 volts, okay, I equal to 4 ampere.
सो ये एग्जामिनर दिया, ये कितना होता है सर 12, ठीक है सर, ये नोड वोल्टेज 12, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो 12 माइनस 3, ये 4 एम्पियर आया ना, सो दिस इज 3, 12 माइनस 3 by 3, 9 by 3, 9 by 3 कितना, 9 by 3 is 3। सो ये 4 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये करंट कितना होना चाहिए केसीएल चाचा को सेटिस्फाई करने के लिए, ये तो 4 एम्पियर, ये तो 3 एम्पियर, सो कंपलसरी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। So I got the information regarding the IS, it is equal to 1 ampere. Next, what happened in the above circuit? What is the value of I when Vs equal to 12? So I kept the I as it is. Now I made this equal to 12. Okay. Then what about this current is the question. Take the node voltage V. V minus 12 by 3, V by 3, entering is 1 equal to 0. So V minus 12 plus V minus 3 equal to 0, V equal to 7.5. Then what is I? V by 3. V by 3 ना 2 point, कुछ किया, एक मिनट, वो सर्किट Vs तो 3 वोल्ट है, I is 4 एम्पियर, परफेक्ट, 4 3 is 12, ओके, 12 minus 3 तो 9, 9 by 3 तो 3 एम्पियर, परफेक्ट, ठीक है, इससे 3 जा रहे हैं, oh sorry, this is 7 एम्पियर ना, KCL 7 एम्पियर, minus 7, 7 3 कितना होता है, 2V equal to 33, आपका V कितना, 33 by 2, I equal to 33 by 2 by I value V by 3 na, by 3, that is 11 by 2, 5 point. Okay sir, okay, generally I avoid superposition theorem. Why I avoid superposition theorem is it requires more time to solve the question because you need to apply two sources one at a time and it takes a lot of time. So this is the way we can solve this question. Okay, fine. Is there any other method you can solve the same question, sir? Definitely yes. So let's solve the same question by different way. So here, let's try by superposition. So by using superposition, see here, by superposition theorem also we can solve the question. Okay. So by using superposition theorem, how to solve the question? Let us see. See here, first case में when Vs equal to 3, I equal to 4 ampere. ठीक है. Okay, simple. See, you know Is equal to 7 na? Replace this with a short circuit. Listen carefully. Short circuit. Okay. Then what is this current? By current division principle, 3.5 and 3.5. Okay. So listen here. This is the Is. Now Is plus Vs is giving me 4. Is पे, you know, Is is contributing 3.5. Okay, that is 3.5 plus 0.5. Right? Then what is the contribution of Is plus 3Vs? It is 3.5 plus. Okay. So now Vs has become 3 fourths 12. So here you just listen carefully.
Now my Vs has become 4 Vs. Then 3.5 because Is is not changed, इसका 3.5 तो change नहीं हो पाएगा, but 0.5 वाला 4 से multiply हो जाएगा. So 3.5 plus 2 5. Same answer. So different ways of solve कर सकते हैं यार. It is your convenience. Whichever you feel convenient, you can go by that. Okay, so this is normal regular node analysis. नहीं है तो मैं क्या किया? First I understood this is 7 ampere. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. So इसमें 7 is only alone, 7 alone contributing 3.5 here. So 3 volts is contributing 0.5. मैं 3 volts को 4 बार multiply किया तो that contribution of 3, that is 0.5, will be multiplied by 4 times. You get 5.5. So not only this way, you can try by different ways according to your convenience. So PDF चाहिए तो तुम पहले क्लास अटेंड करो. एंड पे आई विल गिव यू द डिटेल्स वेयर यू विल गेट द PDF. ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू. सो एक्चुअली क्या हुआ ना, मेनी स्टूडेंट्स ऐसा हो रहा है, ये लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे, डायरेक्टली PDF ले रहा है. ठीक है, तो इसलिए मैं PDF देना बंद किया. ठीक है, चलो लेट्स मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is also is from the maximum power transfer theorem. इसमें थोड़ा सा AC एनालिसिस का बेसिक्स भी पता होना चाहिए. Give it a try. Eighth question. Two sources, I mean one source which contains two parts. Huh? Yeah, only one source is there. Maximum power transfer to the load impedance ZL चाहिए. ये तो स्ट्राइट क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो कर सकते हैं मेरे हिसाब से. I think it is fine now. चलो. So here find omega. So J omega L कितना? J10. So you take 10 angle 0 degrees because power calculation है ना, मैंने RMS ले लिया. Okay. So what is the equivalent source transformation here will be 10 angle 0 degrees into 10 plus J10. 10 into 10 plus J10. What is the load required for maximum power transfer? It must be 10 minus J10. Okay, right. So here the maximum power you get here will be, so this will be 100 root 2 angle 45 degrees, but please remember this is RMS value. Okay, because what is this magnitude? Root of 10 square plus 10 square angle tan inverse of V by A. Okay, that will give you 10 root 2 and 100 root 2. So maximum power is V square by 4 RS. 100 root 2 into 100 root 2
by 4 times 10. Root 2 cancels 2 times, 5 times, 500 ohms. Option B is the right answer. ठीक है, आप यहीं पे 10√2 लेके प्रॉब्लम सॉल्व किया तो ठीक है, that √2 will come here, that will make it 200, then your answer will be multiplied with 2, 1000 will come. That is wrong answer, because always this is maximum value. In power calculation we should take RMS value only. Be careful. Okay, be careful. Chalo, let's move further. The next question, a sunlight, a full sunlight, a solar cell, in full sunlight, a solar cell has a short circuit current of 75 ampere and the current of 70 milliampere for the terminal voltage of 0.6 volt for the with a given load. Okay, the Thevenin resistance of the solar cell, RTH निकालना चाहिए. You need to find the RTH. Find RTH. Asif to the option C. Let us see. Last 10 seconds. हो गया टाइम. ठीक है. सोलर सेल हैज ए शॉर्ट सर्क्यूट करंट. शॉर्ट सर्क्यूट करंट को बोलते हैं आईएससी. आईएससी का मतलब क्या है सर? वीटीएच बाई आरटीएच. इसका वैल्यू कितना है सर? 75 मिली एम्पियर. Current of 70 milliampere for the terminal voltage of 0.6. You have connected some load resistance. You got 0.7. 70 milliampere. Voltage drop कितना आया? 0.6. And okay. Here, let us try by Norton's equivalent, which is easy. Already you know ISC. Okay. So ISC कितना आपको? 75 मिली एम्पियर. इसमें ऑलरेडी 75 मिली एम्पियर आ रहा है. ओके, एंड एज पर एग्जामिनर इंफॉर्मेशन इस पे 70 मिली एम्पियर एंड 0.6, सो इसमें कितना? 5 मिली एम्पियर. सो आरटीएच कितना होता है सर? पैरेलल पे वोल्टेज सेम है ना सर? वोल्टेज इज 0.6 by 5 into 10 power minus 3, so 600 by 5, 120 ohms. Within one step you got the answer. थेवेनिन से भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. आरटीएच सेम है ना? आरटीएच एंड आरएन दोनों सेम. थेवेनिन्स आर नॉर्टन्स रेजिस्टेंस तो सेम. It is easy because ISC is given now. It is easy to find the analysis from the Nortons rather than Thevenins. Okay. Alright, basic. What is your doubt? Here, after this is not voltage source. It is a current source. Current RMS is 10, not voltage RMS. Is it okay? So to find voltage RMS, you should multiply current into impedance. Okay, chalo. Next question, 10th question. We entered into the third chapter, that is the network, two-port networks. Okay. So the next question is from the two-port networks concept. So let's solve the question. The first question, the most repetitive model, that is the lattice network is given, and it is asked to find its Z parameters. So ZA, ZB are given by ZA कितना दिया? ZA equal to 3 plus J4. ZB equal to 3 minus J4. So you have A here, and B here, B here, A here. Yes, give a try and find the answer.
Find the Z parameters. One minute, somebody got asked out. Who is that? Vijay. See here, you can. What is the is question pair? I have taken is VTH only. Okay. After source transformation, this is the voltage V into I into R will give you V and Z. This is the Thevenin's voltage and Thevenin's impedance here. Okay. For the Thevenin's voltage, I took the RMS. And you know, for the power formula of the whenever load is a complex conjugate of the source impedance, then what is the maximum power is given by V square by 4RS. That V is nothing but this VTH. Okay, I haven't taken source voltage directly. In fact, the source is current source. After source transformation, the source is in the format of Thevenin's directly. Okay, chalo, let's move further. Time up. Option B. चलो मेरे हिसाब से B सही हो सकते हैं. चलो here. Forget about the values for time being. ZA. टाइम सेव करना चाहिए. ओके सी मेरा I1 I2 ये भी I2 I1 V1 V2 ठीक है. So what are the formulas for Z parameters? You know, V1 V2 equal to Z11 I1 plus Z12 I2 Z21 I1 plus Z22 I2. आपको पता है मैंने I2 को जीरो किया तो V1 by I1 will give you Z11. So make I2 0. Z11 कितना होता है सर? V1 by I1 and Z21 is V2 by I1. ठीक है, पहले I2 जीरो करके ट्राई कर सो. मैंने I2 जीरो किया तो अगर कुछ करंट ऐसा आ रहा है तो ऐसा आ रहा है तो ये करंट जीरो है ना, सेम करंट इसमें भी चलेगा. ठीक है. Similarly, if this current is zero, if some current is coming here, the same current will flow here also. So it means that the same current is flowing in these two elements and these two elements. It means when I2 is zero, indirectly these two elements are in series. When I2 is zero, a first wala element or second wala element are in series. The same way here also the first wala element and the second wala element are in series. That is A or B. B. Okay. ठीक है. This is V1, I1. ठीक है. So between A and B you have plus V2. Between B and A you have minus V2. I2 is 0. Okay, this is the condition. Now what is Z11 sir? V1 by I1. That is A plus B parallel with A plus B by 2. So
सो आपको ए एंड बी तो दिया ना, ए प्लस बी बाई टू कितना होता है, ये दोनों ऐड किया तो माइनस जे फोर प्लस जे फोर कैंसिल होकर थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स बाई टू इज सिक्स बाई टू इज थ्री। सो फर्स्ट ऑप्शन थ्री है ना, सो ये सही गलत 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 हो गया, क्वेश्चन पूरा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन चाहिए तो यू कैन फाइंड Z21, but you know Z11 equal to Z22 also because it is a symmetrical network, it looks same from both the sides, ठीक है। नेक्स्ट, what about Z12? Z21, sir, it is V2 by I1. So what is your V2? Here the current is same na, I1 by 2, I1 by 2. So what is your V2 is equal to, I will little move it. What is your V2? I1 by 2B minus I1 by 2A. So V2 by I1, B minus A by 2. B. 3 minus J4 minus A by 2. ठीक है, V minus A by 2. So minus 3 plus 3 cancels, minus J4 minus J4 minus J8 by 2. It is minus J4. ठीक है, so it is equal to Z12 also because it is reciprocal network. So option B already we obtained. Okay. चलो next question. So 10 questions तो हो गया. Next question, 11th question. Let's try. The network shown in the figure, the connection of two port networks are shown in the figure, ABCD of the both the networks, ABCD of the combined two port. So I think today's easiest question is this one only. Okay, you can try. Easiest question of today's class. इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, 20 सेकंड दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट क्यों करना। Come on, come on. Right, हो गया टाइम. So overall T parameters when they are in the cascade, what is the answer? Product of individual T parameters. So 1, 0.2, 1. That will give me 2, 1.2, 1. 2, 1.1. ये तो नहीं आ रहा है क्या? 1 into 1, 5 into 0.2. 1 into this, okay, 5.2. 1. 25.21. Right, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन तो ट्रांजिएंट का है. सो 3 चैप्टर्स तो कंप्लीट किया. We reached the midpoint of your questions also. 25 question पे. This is the question number 12. So let's start. So in the circuit shown in the figure, initially the switch S1 is open. ये तो बहुत regularly occurred model. ठीक है. दो कैपेसिटर्स विद इनिशियल वोल्टेजेस कनेक्टेड इन अ लूप, देन फाइनल कंडीशन क्या हो सकते हैं. इस वाला क्वेश्चन तो 3-4 बार आया एग्जाम पे. सो प्लीज गिव इट ट्राई. लास्ट 1 सेकेंड हो गया टाइम. So in the circuit shown in the figure, initially switch S1 is open for a, okay, the capacitor C1 has the charge of Q
Q equal to CVR. So C1 equal to Q1 by V1. So charge, right, or capacitor का charge 6 coulombs, capacitor value 1 farad. So initial voltage is 6 volts. Similarly, what about V2? It is same 0 by 2. That will give me 0 volts. Right. So the charge on the capacitor at steady state. What is the formula here? Steady state में. Okay, what is V1 of infinity? It is equal to V2 of infinity equal to C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. So C1 is 1 into 6 plus C2 V2 by 1 plus 2, that is 3. So V2 of infinity equal to 3. Then what is Q2 of infinity? CV. Six coulombs. कुछ गलत तो नहीं किया ना, because initially 6 है तो finally भी इसमें 3 आना, सीरीज में सेम है. एक मिनट, नो करंट will flow. एक मिनट. Okay, this is 6 by 3 2 now. Now perfect, because initial charge and final charge same होना चाहिए. ये मैं देख रहा हूँ. Because initially charge 6 है तो law of conservation of charge से final also 6 ही होना चाहिए ना. So 2 volts 1 into 2 2 into 2 4 4 plus 2 6, that should satisfy. इसलिए कुछ कैलकुलेशन गलत किया तो भी आपका कॉन्सेप्ट सही से है तो यू अंडरस्टैंड योर नाउ. ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर. So half part of the questions are done. Half of the time में तो I think 9 10 पे हमने शुरू किया क्लास, 1 आवर का क्लास ले लिया. So एक और घंटा में भी टाइम लगेगा, because initially थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन एक्सेट्रा पे. नाउ इट मे बी we complete less than 1 hour पे हमारा क्लास तो पूरा हो जाएगा. So let's continue with the next question. Class notes का PDF I cannot assure you. I'll try to give, but I cannot assure. Okay. In my Telegram channel. I hope you people have my Telegram channel. नहीं है तो join करो यार. Shankar 10 is my Telegram channel. इस पे join करो. Okay. Please request there. I will send. Okay. Please try this question. The current response of the RL circuit to a unit step voltage is given in the table. The value of L in Henry. इस पे options नहीं है. How do you say answer is A? So please try.
टाइम अप. कोई किया क्या? 2.3. Let's see. Firstly, this is the steady state response, which is equal to V by R. Because steady state में क्या होता है सर? We apply V and R. Inductor acts as a short circuit. ठीक है? And the response will be V by R. So V by R equal to 0.5 sir. R का value कितना सर? R का value कितना सर? V is how much? Unit step response. V तो 1 है ना? 1 by 0.2. R value मिला. ठीक है? So this is I of infinity. What is I of t formula? 1 minus e power minus t by tau into I of infinity. If you substitute t equal to tau, what is your I of t? 1 minus e power minus 1 into I of infinity. So that will give me 0.6312 into 0.5, 0.316. ठीक है? You observe that 3.0.316 happens at time t equal to 0.5. So t equal to 0.5, I of t equal to, so this is equal to tau. So tau is equal to L by R, that is equal to 2. L value equal to 2 times R. Okay. L value equal to 2. Sorry, tau is equal to L by R is how much? 0.5. L is equal to 2 times R. 0.5 into 2. ओके. नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक इक्वेशन पे कोई भी t सब्स्टिट्यूट करो, t equal to 1 सब्स्टिट्यूट करो, whichever you want, you substitute it. I of infinity, you know, I of value you substitute, you know, from that you can find the tau. There is any line you use, it is sufficient. Okay, because from the final value I understand this is compulsory, the tau I directly did it. 1 Henry, 1 Henry, 1 Henry is the right answer. Chalo, next question. Question number 14. So again another question from the transients. Option D, C, D. What is the right answer? In the circuit shown in the figures, which is initially at a position 1, okay, for a long time it is changed to position 2, okay. Firstly, we are always happy to play with the transients, which is at position 1, we are happy to find the initial value of the network, time t equal to 0, minus independent sources connected to the network for a long time, network is in steady state. So, मेरा input तो 10 volt है, resistor is 10 ohm, inductor acts as short circuit. ठीक है. So what is the current IL of 0 minus 1 ampere? ठीक है sir, inductor current cannot change instantaneously, इसको 1 ampere ले लो. ठीक है. Now the switch is moved from position 1 to position 2. ठीक है. So let me move the position 2. Okay. 4 ampere, 10 ohm, switch is at position 2. This is 10. Now find the final value directly to find the response of the RL circuit. Final plus initial minus final e power minus t by tau.
we can use that formula directly. So directly I'm finding time t equal to infinity का value again, the network is in steady state. So replace my inductor with a short circuit. What is your I of infinity? ठीक है, ये तो 4 है तो 2 2 इसमें 2 हो जाएगा. ठीक है सर, 4 will divide into 2 and 2. So मेरा I of infinity is equal to 2 ampere. ठीक है. So now इसमें L equivalent कितना, केवल एक ही इंडक्टर है सर. R equivalent कितना आप देख सकते हैं, करंट सोर्स को ओपन किया तो इंडक्टर का हिसाब से देखो यही से. If you open this current source, 10 plus 10 20. So tau is equal to 1 by 20. So IL of t का फॉर्मूला क्या, फाइनल वैल्यू is 2 plus initial minus final e power minus 20t. So 2 minus e power minus 20. 2 minus e power minus 20t. Option D, option D, option D is the right answer. Let's move for the next question, question number 55. So 15, the last 10 questions are left after this. So let's do it. So in the circuit shown in the figure, the current through the 1 ohm resistor. Okay. So here one is a DC input, one is a sinusoidal input. You need to find the current in the 1 ohm resistor. So let's start. AC analysis का question है. ट्रांजिएंट से दो ही क्वेश्चंस किया क्या? अच्छा ऐसा नहीं. ठीक है, let's see. Here it is a combination of both DC and AC. Here assume the network is in steady state, guys. Assume the network is in steady state. थोड़ा सा शॉर्टकट पॉसिबल है तो अप्लाई करो, कुछ सोच लो आसान से. डीसी का आसान से निकल सकते, एसी निकलने समय पे थोड़ा सा सोच लो अच्छी से. क्लेवर स्टूडेंट might have answered by this time. Very good ऑप्शन. ये जो लोग किया ना राइट आंसर गाइस, सोना एंड राजदीप. कैसा किया सर? अरे भाई आसान है ये तो, ओपन करो शॉर्ट करो, 1 by 1 1 एम्पियर. डीसी का रेस्पॉन्स तो मिला विदाउट पेन एंड पेपर. एसी का समय पे इसको शॉर्ट करो, इंडक्टर जे ओमेगा एल और 1 by root LC कितना, 1 by root LC is 1 by root 0.5 will give you 2. सर नेटवर्क तो रेजोनेंस में है सर, रेजोनेंस में पैरेलल एलसी को ओपन करके छोड़ दो, then what happens, this total current will flow through the resistor only. ठीक है, then 5 cos 2t plus 1 is the answer without doing much math, without pen and paper you can say. But ठीक है आपके लिए. So for DC superposition theorem, two sources of different frequencies are acting simultaneously. हम हमेशा response निकालने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना चाहिए सर. ठीक है सर, करंट सोर्स को ओपन किया मैंने, कैपेसिटर ओपन, इंडक्टर शॉर्ट. तो दिस इज I1, I2 निकालो, हो गया क्वेश्चन. We replace the source with a short. One by j omega c 1 by j 0.5 minus j. Okay, this is 1 by j. Okay, here 1 by xl equal to 1 by xc, omega equal to omega naught. Then LC will act like a open circuit. Okay, and your I in the resistor equal to total current I, source current. That is 590. So what is your I2 of t? 5 cos 2t.
total I of t equal to I1 plus I2. I1 to 1 I 5 cos 2. Without doing all this, I have already told, but with the help of phasor analysis also you get the same. Now here though you can apply current division principle, total current into that particular admittance by total admittance. Apply करो same answer आएगा. ठीक है? चलो next question. Without resonance also you can do, but network is at resonance. So the next question is from the AC analysis transformers, that is the magnetic coupled circuits. Okay, and also RMS values का concept भी apply करना चाहिए. So give a try here. Question number 16. Last 9 more questions. Just 2 days back in our crash course, we have discussed the RMS concept. If you remember that, you can answer this question. So what is the answer? Suman Kumar Roy option B दिया, बाकी लोग तो option ये दे रहा है. What is the right answer? Let's see. ठीक है. So the network shown in the figure, the transfer figure A and B, transformers are identical and ideal, except the transformer B is center tapped. Assuming the ideal diodes, the ratio of the root mean square value of R in the figure A and figure B. So here you get this V naught, okay, minus V naught. Turns ratio दिया क्या? Okay, assume it is 1 by 1 or n, whatever may be, you may get n V naught or whatever may be. So here you get VRMS equal to V naught by root. Fine. This is for first one. Second one में क्या होता है? Sir, here positive half में you get, here negative half में you will get. Yes or no? The response, and both together center tapped response. You will be getting it like this, but the response will be reduced by half because it is center tapped. आधा हो जाएगा ना? So here, what is the V2 RMS? It is also same, but the maximum value is V naught by 2 by root 2. Understand? So now what is the examiner question? The ratio of voltage across the R in the figure A to figure B. So V naught by root 2 by, this is the figure A, by figure B. V naught by 2 by root 2. Okay? That will give you 2. Okay, 2:1. Because the RMS value remains the same, okay, when, even for full rectified signal and half original signal, because after squaring, if the suppose this is the signal, okay, थोड़ा सा basic देना चाहे तो दे सकते हैं. To take this, what is VRMS? Vmax by root 2. Here, what is VRMS? Vmax by root 2. For half rectified, what is VRMS? Vmax by 2. I hope you know that. This may हमने regular classes में discuss किया. But here the magnitude is reduced by half because of this, what we call center tap.
Okay, option B कितना लोग दिया, सुमन and Vinay, right answer. 2:1. So here small change. You get a negative half में output. Here positive half में output, but negative half में उल्टा होके हो जाएगा because of this. Okay. Next question. Similar transformer. ये question तो आसान है. I hope you people can do it. It's not much difficult. So 17th question, 8 questions more. So please give a try. Very good. ठीक है. जितना भी बहुत पॉसिबल है तो उतना गलत तो कर लो यार. एग्जाम पे गलत तो नहीं करना चाहिए. ठीक है. Give a try. Next question. Time up. कोई राइट आंसर नहीं दिया क्या? क्या बात? Consider the transformer to be ideal the transmission parameter A of the network shown in the figure. So transmission parameters के लिए V1 I1 equal to AV2 minus VI2, CV2 minus VI2. So option A is nothing but V1 by V2 at I20. ठीक है. आपने I20 किया तो ये होता है V2. ठीक है. Because of the turns ratio 1 by 2, you get here V2 by 2. ठीक है. And what is the impedance seen here? What is the impedance seen here is given by the formula N1 by N2 whole square into the load impedance. So 5 by 4. Got my point? The impedance seen at this terminal is N1 by N2 whole square into the load impedance. So here you can understand. And because it is parallel, ये आपका V1 है. So a normal regular network only, this is V1, this is 2, and this part can be replaced with, what is the resistance seen? 5 by 4. Okay. And this is your V2 by 2. Now, what is voltage division principle? V2 by 2 equal to total voltage into that particular impedance by total impedance. So, examiner को क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? V1 by V2 ना. Take this to other side. 4 cancels. So 5 by 4 to 8 plus 5 na 30. So V1 by V2 equal to 13 by 10, 1.3. 1.3 is available in the options, right? टफ तो नहीं है. ये सभी कॉन्सेप्ट्स हम रेगुलर क्लास में वी हैव डिस्कस्ड, राइट? एक दो क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए बहुत इजी. इट्स ए मिक्सचर, राइट? 8 questions more. Is it okay? Everybody clear? Shall we go for the next question? Is it fine? चलो. कॉस्मोस दिया ऑप्शन ये, बाकी लोग तो कोई आंसर तो नहीं दिया. ठीक है. So the next question, it is the RLC circuit is supplied by a 230 volts 50 Hz single phase source. The magnitude of the reactive power VAR supplied by the source, volt ampere reactive निकालना चाहिए. So give a try.
This one is not tough, but थोड़ा सा calculation involved है. 18th question, 7 questions. You people are the warriors really. Say you can see starting पे class में 50 लोग हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम के बाद concentration कम होता है कोई भी क्लास में. Few people will stand up to the end of the class that they will do for every class. Those people really deserve the success, I feel. Okay. So always you must have the patience, guys. When you are learning the things, you must have the patience to spend your time and you should sit with patience and do the things. Those who does that, those who are in the live now from past 1.5 hour we are discussing, you definitely deserve the success. So from my side, all the best wishes for you guys. So what is the answer? 230. Chalo. Uh-huh. This is 162.6 plus J 162.6. So it is the Z. Okay. Z1 can be written as root of 162.6 square plus 162.6 square. Angle tan inverse of B by A कितना होता है सर? 45 degrees. 230 angle 45 degrees. Right. So here it is 230. And this impedance is 230 angle 45 degrees, and this one is 230 angle minus 90 degrees. ठीक है. So here I1, I2, I. So I1 कितना होता है सर? 230 by 230 angle 45 degrees will give me 230 angle minus 45 degrees. I2 equal to 230 angle minus 90 degrees by 230. Voltage by current will give you one angle 90 degrees, that is J. Right. So आपका I1 कितना होता है सर? So 1 minute. I1 and I2 दोनों का एडिशन. Total I is equal to 1 angle minus 45 degrees can be written as 1 by root 2 minus J 1 by root 2 plus J1. That will give me 1 by root 2 minus 1 minute, 1 minute, 1 minute. Cancel. 1 minus 0.707. J 0.29. 1 plus J 0.29. This is the current I. So what is the magnitude of the current I? Something you will get.
This is I. V equal to 230 angle 0. So the reactive power Q equal to VRMS IRMS of the source into sine phi. So VRMS is 230 into 0.76 sine 22.5. Yes, you will get 66.89 वोल्ट एम्पियर. आप लोगों को इनमें एक दो कैलकुलेशन में पॉइंट्स में डेसिमल्स में इट मे हैव सम डिफरेंस, डोंट वरी. ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. एक सर इतना करना तो ठीक है. इन दैट केस डोंट गेट एनी कंफ्यूजन. नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हैं. Q equal to directly multiply this. What is that? This voltage into current. What is I1? I1 कितना आया? 1 angle minus 45 degrees ना. I1 square into XL. I1 कितना? Magnitude of I1. 1 by root 2. Overall current is leading na. So okay, fine. So ये just subtract करो, आपको कितना आएगा? ये 30 और 38. Approximately. Okay, mod Q will be around 67. ये भी सही है ना? Because I have subtracted total reactive power में capacitive part और inductive part subtract किया, but ऐसा नहीं कर सकते. Individually calculate करके किया. Okay, better to have total. We can do this law of conservation of power से overall power and इससे real power और reactive power subtract करके बाकी तो reactive show कर सकते हैं ऐसा भी. But this is the perfect way where you don't get a single mistake also. ठीक है? चलो, let's move for the next question. Last 7 questions. Okay, last 6 questions. Yeah, that is also done. Okay. VRMS, IRMS will give you the magnitude of the S. Yes. Don't do the imaginary part of VS. Angle तो लेना चाहिए compulsory. Okay. What is the react? What is that? P equal to, sorry. So S equal to, you take V into I conjugate. Here angle is there. Don't take VRMS, IRMS. गलत है. Okay. Magnitude of S is VRMS into IRMS. Okay. Don't commit these mistakes. And P equal to the real part of V into I conjugate. But here angle is there, guys. So don't miss that part. Q equal to imaginary part of VI conjugate. It looks that directly multiply किया तो answer मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. Okay, please try this question. Please understand the difference between the mod of S and overall S.
एफ पे कॉम्प्लेक्स पावर पे एंगल पी है, वोल्टेज का वैल्यू तो 100 एंगल 0 डिग्री है। 1.33 किलोवाट, 0.993 किलोवाट, डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं? Power delivered by the source. You should find only the real power. Okay, only the real power. So here, what is the current I? I equal to I1 vector plus I2 vector. I1 phasor plus I2 phasor. 5 plus 5 angle 30 degrees. What is the answer of 5 plus 5 angle 30 degrees? Root of 5 square plus 5 square plus 2 into 5 into 5 cos the angle between them is 30 degrees. So let me do the calculation. Okay, some root 93.3 angle 15 degrees. The angle between sine and cos is sorry, both the angles will be 15 na? 30 degrees na, by 2. Now power equal to V into I into cos phi. 100 into root 93.3 cos 15 degrees. So 933. Okay, 933 watts. Perfect. So 0.933. नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. Here P1 is equal to, okay, 100 into 5. Okay, this will be 500. Here P2 निकालने के लिए इसमें रियल पार्ट निकालना चाहिए. That is, this can be written as 5 .
111 cos 30 कितना रूट 3/2 100 500 into root 3/2 430 because any method should give you same answer. So P equal to P1 plus P2. Add the P1 P2 500 and 433 933. ठीक है, any method will give you same answer. इसमें मैं रियल पावर निकाला, इसमें भी रियल पावर निकाला, दोनों को ऐड किया. ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. See how you can add, sir. If you need v square by r plus ax, v square by r plus ax, r2 plus ax. You can write it as v square into r1 minus jx1 by story होता है ना, plus v square into r2 minus jx2 by r2 square plus jx2 square. इसमें you can add the real parts and you can add the imaginary parts. p1 plus p2 कर सकते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20. इट इज ए लोकस डायग्राम का क्वेश्चन है. लास्ट 5 क्वेश्चंस. वीडियो बफरिंग. नहीं यार, ठीक चल रहा है. इज इट ओके? प्लीज कंफर्म नाउ. मैं दो मेथड पे किया, एक बार रिवाइज रिपीट कर रहा हूँ. वन इज वी आई cos phi, find v and I and the total angle. Okay, angle between the two vectors. A 5 angle 0 degrees, a 5 angle 30 degrees. Okay, then resultant will come out like this now with 15 degrees. Okay, that method में मैंने किया. Otherwise individually P1 P2 निकाल के add P1 plus P2. Locus is in the syllabus यार. Last year क्वेश्चन भी दिया, EC पे भी दिया, इलेक्ट्रिकल में भी दिया. इलेक्ट्रिकल पे ऑलरेडी इज देयर, EC पे क्वेश्चन भी आया लास्ट ईयर. कंपलसरी आएगा, आ सकते. मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूँ, ठीक है, कंपलसरी आएगा. ओके, बट इट कैन कम. लास्ट ईयर दिया ना, अर्लियर आल्सो इलेक्ट्रिकल पेपर में 2-3 बार आया क्वेश्चंस. They don't specify locus diagram is in the syllabus or not. It is a part of AC analysis. Don't read the syllabus and try to understand the syllabus. Many people feel difficult with AC analysis, इसलिए मैं ज़्यादा AC analysis का क्वेश्चन करता. So series RC circuit is excited by 1 angle 0 degrees sinusoidal source. The locus diagram of ये तो बहुत केस basic question. Phasor diagram, I is equal to x plus jy when C is varied while R is fixed. It's not difficult here, just attend my class to check. Okay. What is the circuit? For RL circuit, okay, with XL is the variable. This is the
R is the variable. RC circuit में, because current leads, this is with XC variable, this is with R variable. Already we discussed this in the regular class. So he asked for this condition. Okay, इसका derivation भी किया, इनमें तो ये भी prove किया it is a circular shape, why is semicircle, every single minute detail हम regular class में discuss किया. Even you are a YouTube student, it is available in my playlist of lecture batch and the Tesla batch. Otherwise, in plus course we have also discussed this. Okay, this is the answer. About standard आसान question. Next question. Series RLC circuit is excited with an AC voltage source of voltage source. The quality factor of the circuit is given by 30. Q is given by 30. The amplitude of the current at upper higher cutoff frequency is. Try this question. Try this question. Last 4 questions. $17.67. Okay. Sure. A series RLC circuit excited. You know Q. Okay. Q equal to 1 by R root of L by C. Sir, Q तो दिया 30 into root C by L. C is 4 into 10 power minus 6 by 10 power minus 2 is equal to R value. ऐसा क्यों आ रहा है? Omega naught L by R. Omega naught is 1 by root L C. 1 by R. 1 by root L by C. Perfect. L is so Q पता है 30. I know 1 by R root of L by C. 10 power minus 2 by 4 into 10 power minus 6. Okay. So R value कितना? 1 by 30 into 10 power minus 4, numerator पे 10 power minus 10 power 4, 10 power 2 by 2, 100 by 2. इतना कम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. Then what is I maximum? It is omega equal to omega naught I equal to I max is 15 by 0.6. What is omega equal to omega L and omega H? Okay, I will be I max by root 2. That is 15 by, it is not maximum and RMS values. I already told that. When omega is varied, the magnitude of the current with respect to one omega is this, another omega is this. This root 2 is not defining the
maximum RMS values. This is also my RMS, this is also RMS, but this is the RMS for half power. Root 2 into 0.6. Yeah, 17 point. Right. So this is the resonance value. इससे मैंने R निकाल दिया. इससे I equal to what is the resonance में what is the current you get is these two will cancel this by this 15 by R, and the lower and higher cutoff half power frequency में what is the current will be this I, whatever you get at resonance, that I max by root 2. Okay, some people confuse this with Imax, and Imax by root 2 is IRMS. Please, that is 100% wrong. This is the maximum value of the magnitude of the current. It is not the waveform ka maximum. Okay, when omega is varied under different omega, you get different magnitudes of the current. So at 1 omega, you get that maximum highest possible peak. That peak value, that peak may be representing RMS or maximum of the waveform, but at that omega, resonance omega, may whatever you get the magnitude of the current, it may be the maximum or RMS will be highest possible value. That value is given by this. Okay, if you take this is RMS, definitely this is also RMS only. And another omega may you get that RMS by root 2 as the RMS of your next waveform. I mean, this particular frequency signal. Half power of this will come. Chalo. Next. So the last three questions more. 5 by 3, 1.6. 1 minute. ऐसा क्यों किया? Thank you. How much है आप लोगों को? Is it correct now? Calculation के बाद resonance का current तो V by R 15 by 1. So R value तो calculation में कोई गलत नहीं ना? 10 power minus 2, वो तो 2 नीचे आएगा, 10 power 4 ऊपर आया चलेगा, 100 बाहर आएगा, 100 by 2 50. Okay, perfect. 6.35 is the right answer. I'm very weak in the calculations. Okay, next question is ready for you guys in the circuit shown in the figure. So the last three questions. So let's start. इसके बाद तीन questions और बाकी हैं. बैंडविड्थ निकालने ही नहीं चाहिए यार, क्यों करना? बैंडविड्थ निकाल के क्या करते हैं? ओमेगा नॉट बाय 2 प्लस और माइनस 1 बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 होल स्क्वायर से बैंडविड्थ तो मिलेगा, बट इससे क्या फायदा है?
अरे टाइम अप. 0 0 0 0 0. अरे यार सी वैल्यू चाहिए, करंट का वैल्यू नहीं. ठीक है. So in the circuit shown in the figure, the RMS value of the current through the resistor R will be minimum. इसमें R करंट जो है ना ये मिनिमम होना चाहिए. When will you get minimum current in the parallel circuit? करंट मिनिमम होने के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, your parallel LC will act like a open circuit. So firstly, for this part, what is 1 by root LC? 1 by root 10 power minus 4 into 2.53 into 10 power minus 6. What is the answer? So this will give me around 10,000. Okay. 1 by 2 pi root LC will give me around 10,000. So this part already is, so because when first source is applied, this part will act like a open circuit and no current will flow. So when second source is applied, if this part acts as an open circuit, then definitely no current will flow and automatically what happens? The current will be minimum. So second source, what is the second source we are applying? The second source apply करने समय पे 1 by 2 pi root L कितना 100 microhenry ना. So 10 power minus 4 into C must be equal to, what is that? What is that? 30,000 ना. इससे C निकालो यार, ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहिए, करके चेक करो. ओके. इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्या है यार, कैलकुलेशन करना चाहिए, मैं एक्सप्लेन करने पे टाइम लग रहा है. एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली टाइम लगेगा. ठीक है. नेटवर्क्स में सारे क्वेश्चन एक दो मिनट में नहीं कर सकते. ठीक है. एक दो क्वेश्चन ऐसा है ज्यादा टाइम लगेगा, एक दो क्वेश्चन ऐसा है कम टाइम पे हो जाएगा. डोंट एक्सपेक्ट एवरी क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड इन 1-2 minutes. ठीक है. So ये स्ट्राइक हुआ तो कैलकुलेशन केवल. So firstly you understand this frequency में this is at resonance open circuit and this frequency में this will be at resonance. So compulsory इसको open करना चाहिए. इसके लिए C वैल्यू कितना होना है. So इसमें C वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक है. एक मिनट यार मैं चेंज करके आता हूँ. Okay. Next question. So find the root mean square value of the signal.
Last two questions. More. Sin A cos B. एक्चुअली प्रदीप ये तो सीरीज है, इसमें मैं नेटवर्क डिजिटल ले रहा हूँ, बाकी हमारा जो क्रिएट्रिक्स टीम है ना अंकित सर, सभी टीचर्स तो एक दो तीन सब्जेक्ट्स लेके दे विल फिनिश दिस इन द मंथ ऑफ जनवरी फर्स्ट 15 days वी आर प्लानिंग दिस first 1 week. Next 1 week में we have this notes series also for you. Okay, this my session tomorrow digital and my part will be done, and next other subjects will also start. आपको ये चाहिए तो मैं दे सकते हैं, जस्ट a minute. Okay, so firstly it is 3 plus 2 sin a plus b by 2, okay, plus sin a minus b by 2, okay. Sin a cos b का formula, okay. This is sin a cos b, sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. So sorry, sin a plus b by 2 plus sin a minus b by 2. Okay. So that will give you 3 plus sin 3t minus sin t. Now all omega 1, omega 2, omega 3 not same na, so I can apply the formula directly. What is my XRMS? Root of XRMS equal to root of sum of squares of individual RMSs. Root of 9 plus 1 by 2 plus 1 by 2 root 10. Okay. रूट 13 कैसा है आपको? रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डायरेक्ट लगाया क्या? ओके, प्लीज डोंट डू दैट. यस और नो? साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या? साइन ए प्लस बी बाई यहीं पे 2 आएगा. ये है ना फॉर्मूला. Right, 3.16 whatever you got right answer. Next question. So last two questions enter किया हमने. The circuit shown in the below, the average power consumed by the 1 ohm resistor is. Give a try.
Time up. Two sources of different frequencies are acting simultaneously. We need to find the power consumed by the total. Okay, I will do it. Here, this is omega 1, this is omega 2. If you find by superposition omega 1 pay response, omega 2 pay response, you get the current I1 and I2. Okay. So say I is equal to sum of the currents I1, I2, where omega 1 not equal to omega 2. Then what is IRMS? It is root of I1 square RMS and I2 square ka RMS. Okay, I understand. Next, listen here. The total power consumed equal to total IRMS whole square into R. That will give me square of I1 square plus I2 square ka RMS whole square into R. So that will give me I1 RMS square into plus I2 RMS square into R. Why I am doing all this? I want to prove that here P equal to P1 plus P2. Sum of total power equal to sum of individual powers. Superposition not valid if DC is applied, or if omega is same, don't apply this rule. But if it is in different omegas, yes, you can apply the superposition and solve the problem. कोई दिक्कत ही नहीं है. So for power calculation also you can apply the superposition, provided omega 1, omega 2 signals are different. Because in that case, this will come. Because root of 2 times I1 integration of that derivation I have done in regular class already. Integration of I1 square plus I2 square plus 2 times I1 I2 का integration 0 होता है. That case में you get this. Okay. चलो. Now let's solve this question. First case में 10 root 2 angle 0 degrees omega equal to 100. Omega equal to 1000. So 10 root 2 angle 0 degrees omega equal to 1000. ठीक है sir. ओके, मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू तो 1 है, इंडक्टर का वैल्यू तो J1 बिकॉज 1 मिली हेनरी ना. सो मेरा करंट I1 इक्वल टू 10 रूट टू क्यों लेना, आरएमएस ले लो, डायरेक्टली कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा. बिकॉज टाइम डोमेन में ऑलवेज इट इज मैक्सिमम. तो आरएमएस ले लिया 10 by 1 plus J, 10 by root 2 angle minus 45 degrees. So power P1 equal to IRMS whole square into R, that is 50 watt. Okay, power is equal to, don't square V square by R, VR square by R कर सकते, don't do V square by R, गलत. ठीक है, मिस्टेक हो सकते. 10 square by 1 करना, क्या नहीं करना. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड केस में आपका इनपुट क्या, 100 ओमेगा 3000 100 angle 0 degrees omega equal to 3000 radians per second. ठीक है. J3 1. Now what is your I2? 100 by 1 plus J3. 100 by root 10 is the magnitude. फेज से कोई फर्क ही नहीं है. पावर P2 equal to root 10. 100 by root 10 whole square into 1. Overall P equal to P1 plus P2, 1000 plus 50, 1050. बस, ठीक है. So 1050 is the answer. I explained this because you should understand. आपको डाउट नहीं होना चाहिए सर हाउ कैन आई ऐड P1 plus P2 डायरेक्टली, सर सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं क्या. इसको आपको क्लैरिटी देने के लिए ऐसे किया. चलो, बट व्हेन टू सोर्सेस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, हमेशा हमेशा हम इसका रिस्पांस तो सुपरपोजिशन से ही निकालना चाहिए. Let's go for the next last question. The last question for today's class. ठीक है.
Thank you very much for those who were there from the starting to the ending of the session. इस सेशन के आई मीन इस प्रॉब्लम के बाद में स्केड्यूल देता हूँ आपके लिए ये वाला सीरीज का जो क्लासेस है ना इसका स्केड्यूल क्या सभी देता हूँ. सो आई ट्राई टू गिव दिस नोट्स इन माय टेलीग्राम चैनल. आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पता है ना. सो फाइनली सी हियर टेलीग्राम पे नोट्स मिलेगा. शंकर 10. This is the link. राइट लेट मी डू इट. सो 2 वोल्ट्स डीसी है आपके पास. इसमें सुपर इम्पोज किया मैंने 4 वोल्ट्स पीक टू पीक स्क्वायर वेव. ओके पीक टू पीक 4 है स्क्वायर. ठीक है. सो इनिशियली it will be 2. 2 plus 2 पॉजिटिव हाफ में it will be like this 4 वोल्ट. नेगेटिव हाफ में क्या होता है सर. नेगेटिव हाफ में it will become 0 because 2 minus 2 0. Okay because it is originally the superposition of 2 volts and this one प्लस 2 और माइनस 2 ये दोनों ऐड किया तो आपको ये सिग्नल मिलेगा. इसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है. एक्स आरएमएस वैल्यू इक्वल टू सिंपल आंसर 4 by root 2 because this looks like half rectified of 4 volts. Okay signals. Okay half rectified of the 4 volts square wave बोल सकते ना. नहीं है तो डीसी आई मीन डीसी 4 में हाफ रेक्टिफाइड हो गया. 4 by root 2 is the answer. Directly I can say 2 root 2. This is one method. नहीं है तो you can find okay when the average value of XRMS equal to root of DC का RMS क्या 2 square plus here also it is just like DC only because after squaring both the signals will be having same signal, so RMS will be same as this. So for this signal also RMS value will be how much. It is the same as original. If you square it, it will be same not 2 square. So root 8 is the answer. That can be written as 2 root 2. Sum of squares of individual RMSs. This is valid or applicable only. Few points are very important in RMS. My regular class में दिया. When signal half rectified, you get RMS multiplied by root 2. Full rectified में it is same. Okay. And when two signals are added, overall RMS equal to sum of squares of individual RMSs. This rule is valid only when the signal average value is 0. Because a plus b whole square में a square plus b square plus 2ab आएगा. When you do the integration, that integration of 2ab should become 0. That is possible when this average value is 0. Otherwise, you cannot apply this formula. These things I discussed clearly in the regular class. So, मैं 1 minute, आप 2 minute wait करो. मैं I will be providing you the schedule. Just I will pause the class and I will add the schedule and I will come back. Just a minute.
So this is the what we call schedule for you guys. So आज तो second है ना. So today network theory, tomorrow is the digital circuits, okay, and day after tomorrow, Sharma sir is taking aptitude and EMFT will be taken by our VV Reddy sir, and every day you have the classes up to 12th, okay, and electrical machines, signals and systems, analog circuits, power systems. Ankit sir is going to take for you all the core subjects of electrical machines, what we call power electronics, power systems, everything. Pallav sir तो maths ले रहा है, control systems by again BV Reddy sir. So this is the schedule for you for electrical and EC students for the question series. This will go up to 12. Okay, timings be high. Most of the classes are 9 p.m. And some are at 11 a.m. Ankit sir ka, and baki to 2 a.m. 2 p.m. ka. So this is the next series which is going to start on 9th year. Keynote series. Here we will be providing the short notes, right? I will explain the short notes of both the subjects, not the problem series. This is going to happen on next Monday and Tuesday. This Monday, Tuesday, I am taking this, and the next Monday, Tuesday, you will be getting this. And that notes will be shared in our community for sure, compulsory. Okay, so this will go up to 20th. And iske baad we plan many number of things. So don't worry about it. So this is what we are giving for you. So continue your preparation properly. Yeah, we support always in any way. We can, if when you feel any kind of difficulty, you feel free to message me on Telegram or anybody, anywhere. Sir, मेरा कोई दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा help करो, थोड़ा सा whatever kind of guidance you need, always I'm there for you. Don't worry about it. Just a message away. Maybe I will reply little late, but definitely I will reply you. Okay. So you can interact whether in the Unacademy community, wherever it is what we call accessible for you, you can go through. So हम IRMS बैच भी शुरू किया सिविल सर्विसेज मेंस एंड IRMS together we are going to start this particular batch for those who are aiming for ESE and GATE and also IRMS इन लोगों के लिए this will be very much helpful and you can use my code and take the subscription. You will get 23% off on the subscription. Okay, so uh, this is about UPSC GS and GATE combo. आपको 23% डिस्काउंट मिलेगा यूज माय कोड. So when you your friend anybody want to take the subscription you can use it. So exam like experience के लिए तो completely free, don't miss this guys. So मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी अवेलेबल है, इसको एनरोल करो यार, don't miss this. So आपका almost your exam timings might be similar to this based on last year exam pattern हम तो किया almost. So habituate this last 1 week, last 1 month you write these examinations, because next time when you write the exam on February, you will also habituate with the timings, everything. Okay, and you can practice pan India level. You can compete and know your mistakes and rectify your mistakes. You get video solutions, detailed report भी मिलेगा, ठीक है? Thank you very much for your time. आपको scholarship भी मिलेगा, इसमें आपको अच्छी से rank मिलेगा, तो इसके अलावा definitely this exam experience will be more helpful. Thank you very much guys, and again I am saying Unacademy पे अभी तो 23% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है. आप Unacademy पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो so don't delay it further for 2024 aspirants. Yes, this is the right time, don't delay it further guys. आपको 23% डिस्काउंट भी मिलेगा. You can take the subscription as early as possible. Thank you very much for your time. All the best. Tomorrow मिलेगा यार, ठीक है? Thank you. Thank you very much. Bye bye.